ग्रेड 8 का चैप्टर 2, दैट इज मैथ्स का. एंड द ऑब्जेक्टिव विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज what angles are formed due to parallel lines when a transversal intersect two lines. So let's assume that we have two parallel lines, line L, line M. I'll just name it line L, sorry, line L and line M. Assuming that these lines are parallel, these lines are parallel means they will never intersect each other, as well as the distance between both the lines will be always same. Moving ahead, if I draw a transversal to them, suppose I draw a transversal. A transversal is a line which is always in a straight. I will just draw a straight line. Okay, so this is a transversal. Now students, how many angles are being formed over here? I can see that there are 8 angles formed. 1, 2, I'll just name it down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so there are 8 angles are formed. The very interesting part is when you see this diagram, the very interesting part is angle number 1, all the odd number angle number 1 is equal to angle number 3 is equal to angle number 5 will be equal to angle number 7. So all the odd number angle will be equal, and all the even number angle will be equal. So angle number 2 angle is equal to angle number 4 is equal to angle number 6 is equal to angle number 8. So just see the diagram. Angle number 1 will be equal to angle number 3. That means this one and this one will be equal. 2 and 4 will be equal. 5 and 7 will be equal. 6 and 8 will be equal. Okay? So we give them some names depending on their shape. We give them some name to this angle. Before giving the name, I want you to know the concept of interior and exterior. So suppose there are two parallel lines and you draw a transversal to them. So the interior part of the angle, suppose there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angles are formed. The angles which are inside the parallel lines are known as interior angle. The angles which are outside the parallel line, this and this, are known as exterior angle. EX, exterior angle. IN, तो IN means इंटरनल होता है ना, तो अंदर का पार्ट, एंड EX से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, दैट इज एक्स, मतलब बाहर का पार्ट, एक्सटीरियर. ठीक है, तो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल. सो I will just go back to the diagram, our diagram, that is this one. So there are two L, M, two lines. They are both are parallel. The parallel signature is L is parallel to M. This signature, this signature. Now I'll just name to this line, this transversal, that is O. So what is the alternate angle? So alternate angle is if there is a formation of Z or reverse Z. ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं ना, दे ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. बट रिमेंबर, दिस शुड बी अ ट्रांसवर्सल, एंड दिस लाइन should be parallel to each other. This line and this line should be parallel to each other. Okay, so we'll see in this diagram which shapes are making Z. So this one making that, मतलब angle 4 and 6, what I have told you, angle 4 and 6, they both are equal to each other. Understood? They both are equal to each other, hence alternate angles are equal to each other. So if I tell you कि angle 4 is 60 degree, then angle 6 will also be 60 degree. ठीक है, because they both are similar to each other, hence both the angles will be equal. Understood? Now if I tell you there is one more alternative angle, one more internal alternative angle, which is this one, reverse Z बन रहा है ना यहाँ पे. तो 3 and 5 are odd numbers, and this 3 and 5 odd numbers.
3 and 5 odd numbers, both are equal. Okay, so 3 and 5 angles are equal. So if I tell you this angle is 70 degree, so this angle will also be 70 degree. Understood? So this is the concept of internal alternate angle. There is one more concept which is exterior alternate angle. Exterior alternate angle. Exterior means क्या होता है, मैंने बताया था बाहर के एंगल. So angle number 1 is equal to angle number 7 exterior alternate angle, and angle number 2 and angle number 8 are equal. These 2 and 8 are equal because they are even numbers and they are exterior alternate angle. 1 and 7 are equal, they are alternate exterior angles. Understood? If you have any doubt, you can ask me. Now we are done with alternate angle. Moving ahead to the next angle, that is corresponding angle. So I'll again draw two alternative angle, two parallel lines, and then a transversal to it. I can draw like this transversal, or I can also draw this transversal. Both means same. So I will take like this yellow transversal. So if you see the corresponding, if you see there are eight angles are formed. I will name the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so the corresponding means the shape which is L shape or reverse L shape. Okay, so I can see over here is this one and this one, angle number 2 and 6. What I have told you, all the even numbers angles are equal. So these two angles are known as corresponding angle. What are they known as? Corresponding angles. Now I have told you that L or reverse L. I can also see that angle number 1 and angle number 5 reverse L बन रहा है यहाँ पे. So this 1 and 5 both will be equal because I have told you the odd number angles are equal. Clear? So I have told you कि अगर दो पैरेलल लाइन बने हुए हैं, दो पैरेलल लाइन है, एंड इफ आई एम ड्राइंग अ ट्रांसवर्सल लाइक दिस, ठीक है, अगेन यू कैन एबल टू सी यहाँ पे एक एल बन रहा है, यहाँ पे एक एल बन रहा है, यहाँ पे उल्टा एल, यहाँ पे उल्टा एल. सो ये एंगल कैसे इक्वल होंगे? ये एंगल के इक्वल होंगे. शैल आई नेम देम? ओके, आई नेम देम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, तो एंगल नंबर 2 ये वाला एल जो बन रहा है, एंगल नंबर 2 ये वाला एल और 6 विल बी इक्वल. एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 5 विल बी इक्वल. तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल. ये वाला करस्पॉन्ड है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 2 and 6 विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा. अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा. अंडरस्टूड? सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ओके, मूविंग हेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल विच इज supplementary angle. Supplementary angle means what? If a 180 degree angle is drawn over here, 180 degree angle means if I take a point and these are the two arms, this one is this and another is this, the पूरा डिग्री कितना है? ये 180 डिग्री. सपोज इफ आई ड्रॉ अ लाइन यहाँ बीच में, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. क्लियर? तो मैं फिर से पैरेलल लाइन की तरफ जाता हूँ. व्हेन आई एम ड्राइंग अ पैरेलल लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल आया, सो यू कैन सी ऑल द एडजेसेंट एंगल्स आर supplementary. Adjacent angle means 1 and 2 are supplementary to each other. 1 and 2 are supplementary to each other. 3 and 4 are supplementary to each other. 5 and 6 are supplementary to each other. 7 and 8 are supplementary to each other. Also 2 and 3 are supplementary to each other. 6 and 7, all the adjacent angles are supplementary to each other. That means if I tell you कि ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा? सॉरी, 60 है नहीं, ज़्यादा है एक्चुअली, ये 110 के आसपास है. तो इफ़ आई टेल यू कि एंगल 2 110 है तो ये बचा हुआ कितना होगा? 70 डिग्री होगा.
क्यों? बिकॉज दे when you add both the angles 2 and 3, when you add angle number 2 plus angle number 3, you will get कितना 180 degree, because the straight line always make कितना डिग्री 180 degree. A straight line always make 180 degree. If you observe the watch at your home, घड़ी तुम देखोगे घर पे, तो अगर 6 बज रहा होगा ना, दैट मीन्स जो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में 180 डिग्री का. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तुम लोग जितना भी देखोगे ना एडजेसेंट एंगल, 1 + 2 करोगे तो 180 आएगा, 4 + 3 करोगे तो 180 आएगा, 2 + 3 करोगे तो 180 आएगा. ठीक है, ऐसे 6 + 7 करोगे तो 180 आएगा, 5 + 6 करोगे तो 180 आएगा, 8 + 5 करोगे तो 180 आएगा. दैट मीन्स ऑल द एडजेसेंट एंगल व्हेन यू ऐड देम यू विल गेट 180 degree. Hence they are known as supplementary angles. So the last we have covered till now what are the alternate angle, corresponding angle, supplementary angle, interior exterior angle concept. Now the last concept which is remaining and bit important for all of you is when two lines intersect each other. I'll draw a straight line. थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था. I'll draw a straight line. So when two lines intersect each other, I'll again name them. Name them means I'll name the angles. How much angles are formed? 1, 2, 3, 4. Students, 4 angles are formed over here. I have told you again the rules apply the same. One angle number is equal to angle number 3. All the odd numbers is same. Angle number 2 will be equal to angle number 4. Even number angles are same. So that means अगर एंगल नंबर 2 का जो 60 डिग्री होगा तो ये एंगल नंबर 4 भी 60 डिग्री होगा. एंड रीजन क्या रहेगा उसका? दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर. दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो अगर एंगल नंबर 1 की वैल्यू होगी 120 तो एंगल नंबर 3 की वैल्यू कितनी होगी 120. यू कैन ऑल्सो सी ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, राइट? ये पूरा एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आई कैन सी ये पूरा सर्कल बन रहा है. आई कैन सी ये पूरा सर्कल बन रहा है. तो व्हेन यू सर्कल के कितने डिग्री होते हैं टोटल? व्हेन यू ऐड 120 60 120 60 तो 12 + 12 24 240 हो गया ये. एंड 60 + 60 कितना हो गया 120. 240 + 120 कितना होगा 360 डिग्री. सो ये पूरा कितना हो जाएगा सर्कल बना तो 360. तो हैंस आई विल जस्ट रिपीट. हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया? हम लोगों ने अभी तक किया पहला अल्टरनेट एंगल विच इज़ z और रिवर्स z. और ये कब होता है? ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. और हम लोग इसके बाद किया करस्पॉन्डिंग एंगल विच फॉर्म्ड L और रिवर्स L. एंड उसके बाद हम लोग ने किया सप्लीमेंट्री एंगल. व्हेन यू ऐड 2 एंगल्स एंड यू गेट 180 डिग्री देन इट इज़ नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल. उसके बाद हम लोगों ने किया लास्ट में हम लोगों ने किया वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल will be equal to this angle, and this angle will be equal to this angle. Clear? So till now we have done alternate angle, corresponding angle, supplementary angle, vertically opposite angle. Okay students? Okay, if you have any doubt you can call me or ask me.